जाती है, ठीक है। ये हमारा वे है टू पार्टिसिपेट एज अ पार्टिसिपेंट। नाउ व्हाट्स द सेकंड वे टू पार्टिसिपेट इन हैक्टोबरफेस्ट? इट्स कॉल्ड द मेंटेनर। अब मेंटेनर कौन होता है हमारे पास? जो एक किसी भी रेपोजिटरी को बनाता है जिसके ऊपर हैक्टोबर फेस्ट या हैक्टोबर फेस्ट 2021 का लेबल लगा होगा। बेसिकली एक टॉपिक होगा इस दफ़ा 2021 में। तो मतलब वो हैक्टोबर फेस्ट के लिए रेपो जो है वो डिवोटेड होती है, और जो भी इस पे आके पुल रिक्वेस्ट यानी कंट्रीब्यूट करता जाएगा, तो उसका जो मेंटेनर होगा, जो उस रेपो का मेंटेनर होगा, वो अगर तो वो आपके पुल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो इस तरह से आपका जो एक आप एज अ मेंटेनर वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। तो इसमें बेसिकली ये होता है, एज अ मेंटेनर अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप अपनी रेपोजिटरी चला रहे होते हो, और बाकी सब जो होते हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, राइट। तो थर्ड वे क्या है इसमें पार्टिसिपेट करने का? ऑर्गेनाइज एन इवेंट, ठीक है। अब पहला वे था पार्टिसिपेंट की तरह आप उस पर पार्टिसिपेट करो। सेकंड वे था एज अ मेंटेनर, और थर्ड वे है एज एन ऑर्गेनाइजर ऑफ द इवेंट। तो ऑर्गेनाइजर ऑफ द इवेंट बेसिकली आप पूरा हैक्टोबर फेस्ट का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो। इस दफ़ा तो कोविड है, बट इससे पहले हमारे पास इवेंट ऑर्गेनाइजर के पास काफ़ी प्रिविलेजेस होते थे, बट क्योंकि कोविड है तो अब उनके पास इतने प्रिविलेजेस नहीं है। तो बेसिकली हैक्टोबर फेस्ट 2021 में यू विल बी वर्किंग ऑन गिटहब, and for the details of this, we have Arslan Khatak with us today to help you and to give you a walkthrough of everything required to participate in Hacktoberfest 2021. So Arslan, you can take over now. It's your go. All right. Thank you so much. So just give me a second. Let me turn on my camera. All right. Perfect. So, okay. So let me share my screen, and then we can just jump into it. But before that, just one quick question. So I would need everyone to interact with me. So if everyone can, if any one of you has some experience on, or if you have used GitHub before, so just give me a thumbs up in the chat, या फिर yes या कुछ भी वहाँ पे लिखते, so that I can have an idea कि like what kind of audience I have today. So if you have worked on GitHub, or if you haven't, still just give me like yes or no या फिर कुछ भी, so that I can get an idea. All right, awesome. Perfect. So I can see most of you have used it before. So all right. So yeah. That means that I will not be diving deep into like a lot of instructions because most of you already know that, and like have some experience on that. I'll be again just will be still going through the basic things ताकि जिनको idea नहीं है तो उनको भी हो जाएगा. So let me start with my introduction, and then we can move on towards the agenda. So yeah, I'm Aslan. I works at MLH, Major Geek Hacking. I specifically works at their fellowship department, which is something like Google Summer of Code. So if anyone knows about Google Summer of Code, the only difference about fellowship and the Summer of Code is just for 3 months, but fellowship जो है उसके application throughout the year open होते हैं, and it's something which you can join if you want to be part of like open source community. I want to step into the open source. Apart from that, I'm a GitHub campus expert and I am a developer advocate. So those of you who do not know about developer advocate, so it's a very interesting position in which you get paid for community contribution. For example, like giving a talks, writing an article, making a video, anything like that. So that's called developer advocacy. So apart from that, you can find me on social media. My handle is same everywhere, which is Khatak Dev. If you, in case you lose that, you can visit my website and you can get it from there, which is khatak.dev. So yeah, that's a bit about me. And by the way, I'm also a student. I will be graduating next year in June 2022. So let's move on towards the agenda. And before I continue, give me a signal if my audio is perfectly audible.
there is some sort of distortion in your voice. कहीं पर माइक आवाज बिल्कुल क्लियर No, हो जाती है, Shazib. कहीं पर एकदम मफल्ड हो जाती है. No, Shazib is completely perfect. Yes, it is completely audible. Okay, so Shazib, I guess it's issue on your side. Yeah. All right. So moving on toward the agenda. So we will start with the basics, like what exactly is the difference between Git and GitHub, because most of the people confuse themselves thinking Git and GitHub same cheese hai, which is not the case. So we will start with that. Then we will see how you can install that. Then we will see how Git Flow works. So this Git Flow is the most important concept that you need to learn. And then we will talk about so till the Git Flow, it's going to be theory, and then from that we will move on toward the practical things. So उसके बाद हम check करेंगे how to create your local repository, making your first commit, GitHub repository is linking that with the remote repository. So we will go through these by details. But this is the overall agenda. So starting with the basic difference, exactly difference क्या है? So Git is a software, whereas GitHub जो है वो आपके पास एक website है. So that is the main difference, the major difference between these two. Git को आप इंस्टॉल करते हैं on your local disk, whereas GitHub को आपको कोई इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है. सिंपल एक वेबसाइट है जैसे आपके पास गूगल ड्राइव है या फेसबुक है, इस तरह की वेबसाइट है. बट वहाँ पे आप अपना कोड होस्ट करते हैं, आप अपना कोड शेयर करते हैं वहाँ पे. सो इट्स लाइक एक आपके पास डिस्क है जहाँ पे आप अपना कोड सेव करते हैं. सो दैट इज गिटहब. वेयरएज गिट एक एल्गोरिदम है जो कि आपकी हेल्प करता है डिफरेंट सारी चीज़ों में. Now, वो क्या help करता है and why do we even need Git and GitHub? So let's talk about that as well. So let's say you are working on your final year project and आप obvious है कि आपके साथ कोई ना कोई टीम में होगा, 3-4 बंदे या 2 एटलीस्ट, कोई एक और होगा. So in that case, let's say you are working on let's say it's a web based application, कोई आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप लॉगिन मॉड्यूल जो होता है, लॉगिन फंक्शनलिटी है, आप उस पर काम कर रहे हैं, आपके जो पार्टनर है वो साइन अप पे काम कर रहे हैं. आपने अपने फीचर इंप्लीमेंट कर दिया, आपके पार्टनर ने भी साइन अप इंप्लीमेंट कर दिया. नाउ उन दोनों को फिर आपस में भी आपने मर्ज करना है, क्योंकि आपके पास आपका कोड है, आपके पार्टनर के पास उनका कोड है. सो उन दोनों को मर्ज करने के लिए या तो आपको कोड व्हाट्सएप पे शेयर करना होगा, या ईमेल पे शेयर करना होगा, या यूएसबी के थ्रू आपने शेयर करना होगा. नाउ शेयर तो आप कर देंगे, मतलब एक डिस्क से दूसरे डिस्क तक पहुंच जाएगा, बट उन दोनों को मर्ज करना, लेट्स से आपने 5 डिफरेंट फाइल्स में चेंजेस किए और उन्होंने भी 5 डिफरेंट या 10 डिफरेंट फाइल्स में चेंजेस किए. नाउ उन दोनों को मर्ज करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपने एक एक चीज़ देखनी है. ये भी हो सकता है कि इंडेक्स एक फाइल है अगर से CSS की या HTML की, उसमें आपने भी चेंजेस किया, उन्होंने भी चेंजेस किया. सो नाउ यू हैव टू फिगर आउट के कौन कौन सी अपडेट्स कहाँ कहाँ ऐड करनी है. सो इसके लिए या तो आपको एक थर्ड पर्सन ढूंढना होगा, बट अगेन दिस इज अ ह्यूज हेडेक कि आप मैनुअली बैठ के ये चीज़ें चेक करें कि कहाँ कहाँ चेंजेस हुई है, दूसरी फाइल में कहाँ चेंजेस हुई है, उनको मर्ज करें. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, that is one of the issue जो कि Git helps us to solve that problem. Another thing is, let's say आपने कोई changes कर दी, 2 दिन बाद आपको आइडिया हो गया कि वो जो changes हो गई थी वो आपने नहीं करनी थी, या उसके थ्रू आपके पास कुछ मेजर इश्यूज आ गए. तो नाउ यू हैव टू फिगर आउट कि आपने क्या क्या चेंजेस की थी, कहाँ कहाँ की थी, और मे बी आपकी किसी और टीममेट ने की हो, तो वो भी एक बहुत ह्यूज इशू आ जाएगा आपके पास. सो गेट आल्सो हेल्प्स यू इन दैट एज वेल. नाउ द वे इट हेल्प्स यू इज, अगर आप 2 बंदों ने चेंजेस किए हैं, सो इट हेल्प्स के जो भी चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली उसको मर्ज कर देता है, ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर देता है कि कहाँ कहाँ चेंजेस हुए और वो मर्ज हो जाती है. दैट सॉल्व्स द फर्स्ट प्रॉब्लम. द सेकंड प्रॉब्लम, उसके लिए व्हेन एवर यू डू सम चेंजेस, तो उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है, एक स्नैपशॉट बन जाती है, और उस स्नैपशॉट पे जो भी डिटेल्स है, लाइक कहाँ पे चेंजेस हुई है, किस बंदे ने चेंज किया है, क्या डेट थी, क्या टाइम थी, क्या नाम था, क्या ईमेल एड्रेस था, कंप्लीट डेटा जो है वो आपके पास आ जाता है. So then even if you check the code like even 10 years later, तो तभी भी आपको 10 years पहले का जो भी रिकॉर्ड होगा वो आपको शो होगा. So that is another reason कि we have Git and have the GitHub. And so ये फायदे हैं Git के. And then GitHub जो है, that's basically just a software, a website जो कि based है on Git. So that is the main idea about the difference between Git and GitHub, and why exactly do we need Git? Why is it so famous? Another thing to keep in mind is, just like Git, there are other algorithms as well.
but Git is like the most famous one. So for example, Facebook जो अपने internal code base के use करता है, they use a totally different version control system. So Git is actually a version control system. Now version control again, आपके पास different versions बनते हैं. जैसे मैंने भी बात की, आपने कोड किया 10 साल बाद आप उसको चेक कर सकते हैं, तो एक आपका एक वर्जन बना हुआ था. तो दिस इज कॉल्ड अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम. और फेसबुक के पास अपना वर्जन कंट्रोल है. एंड देन लाइक so the point is like it's not just GitHub के अलावा भी आपके पास different algorithms हैं which people can use. Now, moving on to the installation part, it's super simple. All you need to do is you have to visit this website git-scm.com and install this. So if I jump into it, so it's the theory part, so I'm trying to speed it up, but जब हम practical पे जाएंगे, so I will be talk about it in a bit more detail. So yeah, all you need to do आपने यहाँ पे आ जाना है and simply download it for your operating system. So and if you are using Ubuntu, so make sure that you install that with the terminal. We sudo apt get install git all. So all you need to do is just that. So once you install that, now those of you okay, so those of you who are not sure about GitHub या फिर first time use करेंगे, so कुछ आपके पास terminologies होती है in Git. First terminology is repo. Let me turn on the laser. So first terminology is the repo, repository. Now, what exactly is repository? So think of a repository as a folder that you creates in your Windows and your operating system, but with some superpowers. Now, वो superpowers क्या है? वो superpowers ये है कि जो भी उसमें changes होती है, उनका स्नैपशॉट बनता है, वो रिकॉर्ड होती है, विच इज़ नॉट द केस विद नॉर्मल फोल्डर्स. जैसे आपने विंडोज में डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर बना दिया, उसमें आपने कोई फाइल बना दी, नोटपैड की सिंपल फाइल है, उसमें आपने आज कुछ टाइप किया, क्लोज कर दिया, सेकंड डे आपने फिर से कुछ टाइप कर दिया, क्लोज कर दिया. नाउ ये चेंजेस कभी भी आपके पास सेव नहीं होगी, मतलब आपको आइडिया नहीं होगा कि किस दिन पे किस बंदे ने क्या चेंजेस किए. Whereas in रिपोजिटरी आप ये सारी चीज़ें जो है चेक कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड अ रिपोजिटरी. रिपोजिटरी आपके पास सिंपल एक फोल्डर होता है. उसके अलावा three main things, commit, push and pull. So push means कि when you move your code, आपका जो भी आपके पास लोकल कोड होता है, जब आप उसको लोकल डिस्क से उठा के GitHub पे ऐड कर देते हैं, सो सिंस आई सेड कि GitHub जो है आपके पास कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना कोड सेव कर सकते हैं. तो सेव करने के लिए आपको अपने लोकल डिस्क से उधर भेजना होगा, जिस तरह नॉर्मल अपलोड होता है. सो अपलोड जो होता है गिट के टर्म्स में उसको पुश कहते हैं. एंड देयर इज अनदर टर्म पुल. पुल जो होता है दैट इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ पुश, कि जब आप अपना कोड डाउनलोड करते हैं फ्रॉम GitHub टू योर लोकल डिस्क, तो उसको कहते हैं पुल. So repository, push, pull, and then the last thing is commit. Commit means कि when you make some changes और आप उसको सेव करना चाहते हैं, एक स्नैपशॉट बनाना चाहते हैं. Now snapshot means कि उस टाइम पे वो जितने भी आपने चेंजेस किए और जो टाइम है एग्जैक्ट वही टाइम, और आपका नाम, आपकी ईमेल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है उनका एक रिकॉर्ड बन जाता है, उनका एक स्नैपशॉट बन जाता है. तो उसको कहते हैं स्नैपशॉट, उसको कहते हैं कमिट. तो जब भी आप कमिट करते हैं तो आपका डेटा जो है वो सेव हो जाता है उस टाइम पे. नाउ दीज आर द फ्यू टर्मिनोलॉजीज. और फ्लो जो है गिट का वो कुछ इस तरह है कि आपके पास स्टार्ट में एक नॉर्मल या फिर एक सिंपल वर्किंग डायरेक्टरी होती है, जिसको आप कंसिडर करें आपके पास जो राइट क्लिक करके आप न्यू फोल्डर बनाते हैं, थिंक ऑफ दैट एज योर वर्किंग डायरेक्टरी, सिंपल दैट. उसके बाद आप ये कंप्लीट प्रोसेस है फ्रॉम आपके पास जो लोकल डिस्क में कोड है उसको वहाँ से उसको जब आप GitHub पे लेके जाते हैं, वो जो कंप्लीट प्रोसेस है वो ये है. नाउ ये रिमोट पार्ट जो है, दिस इज रेफरिंग टू GitHub, वेयर एज ये वाला जो पार्ट है दिस इज रेफरिंग टू द लोकल डिस्क. सो समवन इज सेइंग कि नो वॉइस. I believe this is just with you, Ahmed. Can someone confirm me if I'm still audible? Yes, Aslan, you are quite audible. I think Ahmed is having problem at his side. All right. If someone can let him know in the chat, since he cannot hear me. Okay.
So fetch, someone is asking what is fetch, sir. So if you can please ask this at the end of the session, once I go through this, so then you will have a perfect idea कि exactly क्या होता है. So please remind me this at the end of the session. Okay, so working directory आपके पास होती है जब आप अपना कोड. One thing to keep in mind, जब भी आपके पास एक रिपोजिटरी है उसमें आप कोड लिखते हैं, नो मैटर आप जितने भी कोड लिखे, जब तक कि आप उसको रिपोजिटरी गो का रिपोजिटरी मीन्स आप उसको कमिट नहीं करते तब तक आपके पास वो सेव नहीं होता. अगर से आपने सुबह 6 बजे से काम स्टार्ट किया, 8 बजे तक आपने काम किया, 8 बजे पे जाके आपने कमिट कर दिया, मतलब एक स्नैपशॉट बना दिया, तो सिर्फ वो स्नैपशॉट होगा. उससे पहले जो आपने 6 बजे से 8 बजे तक किया था उसका उसका एक एक एग्जैक्ट मिनट नहीं होगा. जिस टाइम पे आपने उसको स्नैपशॉट बनाया सिर्फ उस टाइम वो टाइम होगा, और साथ ही में 6 बजे से 8 बजे तक आपने जो कोड लिखा होगा वो कंप्लीट कोड होगा. सो जिस टाइम पे भी आप उसका स्नैपशॉट बनाएंगे सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा. एंड ऑफ कोर्स जो भी लास्ट स्नैपशॉट से नेक्स्ट स्नैपशॉट तक जितनी भी चेंजेस हुए हैं वो सारी चेंजेस वहाँ पे आएगी. बट टाइम आपका एग्जैक्टली वही टाइम होगा जिस टाइम पे आप उसको कमिट करते हैं. सो होता यह है कि आपके पास जो वर्किंग डायरेक्टरी है, वर्किंग डायरेक्टरी से आप अपना कोड भेजते हैं टू लोकल रिपोजिटरी, बट उसके बीच में आपके पास एक स्टेज होता है, स्टेजिंग एरिया. नाउ स्टेजिंग एरिया एक्ट्स एज अ मिडलमैन, और वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपना कोड डायरेक्ट पुश कर दें, कमिट कर दें एंड मूव कर दें टू लोकल रिपोजिटरी. सो थिंक ऑफ दिस एज कोई भी वेटिंग एरिया जो होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या कहीं भी आप चाहते हैं. सो आप अपना कोड पहले भेजेंगे टू द स्टेजिंग एरिया. वहाँ पे आप एक दफ़ा अपने कोड वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने फाइल्स कि क्या ये फाइल्स हैं जिनको मैं भेजना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड देन वहाँ से आप उसको लोकल रिपोजिटरी में पुश कर सकते हैं. सो अगर से आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप पहले जाते हैं वेटिंग एरिया में, वहाँ पे वेट करते हैं, उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं. सो थिंक ऑफ द स्टेजिंग एरिया एज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो आपके पास वेटिंग एरिया होता है, थिंक ऑफ इट एज दैट. एंड देन वहाँ से आपके पास जो भी फाइल्स होती हैं वो आपके पास लोकल रिपोजिटरी में चली जाती है. लोकल रिपोजिटरी में आपके पास जब फाइल्स आ जाती है तो वो एक स्नैपशॉट बन जाता है विच हैज़ आर द फाइल्स दैट वाज चेंज फ्रॉम द प्रीवियस स्नैपशॉट, और साथ ही साथ आपका नाम, आपकी ईमेल, और जो उस टाइम पे आपने जिस टाइम पे आपने कमिट किया होता है. अगर से आपने 6:15 पे किया तो आपके पास आ जाएगा 6:15, वो आपके पास एक कमिट हो गया. उसके बाद आपकी जो फाइल्स है आप उसको भेजते हैं टू रिमोट रिपोजिटरी टू द गिटहब, ताकि हर किसी को एक्सेस हो उस कोड का. सो दैट इज़ द जनरल फ्लो. एंड अनदर थिंग टू कीप इन माइंड इज कि ये 2-वे प्रोसेस है. सो से आपकी अगर आप वर्किंग डायरेक्टरी से आप फाइल्स भेजना चाहते हैं तो रिमोट रिपोजिटरी, तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं. से आपने कोई कमिट कर दिया तो उस कमिट को आप रिवर्स भी कर सकते हैं. आपने कोई चेंजेस अगर पुश की है गिटहब पे भेजी तो आप गिटहब से वापस भी आ सकते हैं पुल करके. सो इट्स अ 2-वे प्रोसेस. So that was the theory part, and जो ये last slide थी, this is the most important thing, क्योंकि if you understand this तो you will be able to figure out कि how exactly it works या फिर आपको क्या करना होगा. So you just need to remember कि आपके पास 3-4 स्टेजेस होती हैं. आपकी फाइल्स जो है सबसे पहले स्टेजिंग एरिया पे जाती हैं, एंड देन उसके बाद आपकी फाइल्स जाती है टू द लोकल रिपोजिटरी, एंड उसके बाद आप उसको भेजते हैं टू द गिटहब. सो ये आपके पास 3 से 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं. नाउ उसके बाद वी आर मूविंग टुवर्ड द प्रैक्टिकल थिंग्स. सो आई विल मेक श्योर कि मेरा पेज थोड़ा सा स्लो हो जाए सो दैट यू गेट इन आइडिया कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड यू विल बी एबल टू कैच अप. सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट हम यहाँ पे एक रिपोजिटरी बनाएंगे जो विच आई मेंशन कि इट्स अ सिंपल फोल्डर विद सम सुपर पावर्स, और उसमें ये होगा कि आप जो भी चेंजेस करेंगे वो सारी चेंजेस आपके पास ट्रैक होगी और उसको आप चेक भी कर सकते हैं उसके बाद. सो फॉर दैट सिंपली आपने ये करना है कि आपने एक न्यू फोल्डर बना देना है और उस फोल्डर को आप अपने एडिटर में ओपन कर देना. सो इट डजेंट मैटर आप जो भी एडिटर यूज़ करना चाहते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं. सो आई यूज़ विजुअल स्टूडियो कोड, सो मैं उस पर जाऊँगा. सो सिंपली मैं ये कहूँगा कि आई विल मेक अ न्यू फोल्डर एंड लेट मी कॉल इट मे बी HK Fest. सो ये मैंने सिंपल फोल्डर बनाया. इट हैज़ नथिंग टू डू विद गिटहब या गिट. सिंपल आप राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाते हैं, वही एग्जैक्ट स्टेप मैंने टर्मिनल में परफॉर्म किया. एंड देन आई विल ओपन इट इन माई विजुअल स्टूडियो कोड. सो ये जो 2 स्टेप्स मैंने यहाँ पे किया है
यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। ये सिंपल वही स्टेप है जो आप ऐड करके न्यू फोल्डर बनाते हैं और उसी फोल्डर को आप अपने कोड एडिटर में ओपन करते हैं। सो ये वही 2 स्टेप्स हैं, मैंने जस्ट उसको टर्मिनल पे किया। नाउ आई हैव दिस प्रोजेक्ट हियर विजुअल स्टूडियो कोड में, और इस टाइम पे ये एक सिंपल फोल्डर है, उसमें कुछ भी खास नहीं है। एंड आई कैन शो यू दिस एज वेल। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ index.html and maybe I type hello, save this. So again ये just मेरे पास एक बहुत सिंपल फोल्डर है, यहाँ पे कोई भी खास चीज़ नहीं है। Now we have to make this a repository with the help of this command git init. Now another thing is जब आप git init यूज़ करेंगे, so उससे पहले if you remember I told you to you have to install git which was from git-scm.com. So आप जब उसको एक दफ़ा इंस्टॉल कर दें, सो यू कैन आल्सो क्रॉस चेक दैट कि वो आपके पास इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हुआ। एंड यू नीड टू टाइप गेट, आप या तो जस्ट गेट टाइप कर दें या फिर गेट या जस्ट आप गेट टाइप कर दें, आपके पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आप गेट को आप यूज़ कैसे करना है। अगर आपके पास गेट इंस्टॉल नहीं हुआ फॉर सम रीज़न, या फिर आपके बीच में कैंसिल हो गया था एक्सेट्रा, तो आपके पास आएगा कि अननोन कमांड कुछ इस तरह का आ जाएगा। सो keep that thing in mind and yeah, so मेरे पास यूजेज आया यहाँ पे, so that means कि मेरे पास सक्सेसफुली गेट इंस्टॉल हो चुका है। so यहाँ पे आपने ये करना है कि आपने इसी फोल्डर को ही अपने टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें ओपन करना है। वन गो क्विक वे इज आप यहाँ पे ऊपर जाके गो टू द टर्मिनल एंड क्लिक ऑन दिस न्यू टर्मिनल। सो ये आपके पास एक टर्मिनल ओपन कर देता है और वो ऑटोमेटिकली इस फोल्डर को ही ओपन कर देता है। यहाँ पे आपने टाइप करना है get init and save। अब यहाँ पे you can see initialized empty git repository in and then उसका पाथ है। and another thing is अगर आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आती, so just ask that question in the chat and मैं उसको रिपीट कर दूंगा। okay, so अभी मेरे पास ये जो फोल्डर था, जो सिंपल फोल्डर था, वो एक रिपोजिटरी बन गई है। एंड यू कैन आल्सो सी कि ये जो मेरे पास index.html था उसका कलर भी चेंज हो गया है। एंड साइड पे यहाँ पे एक छोटा सा यू आ रहा है। सो यू मीन्स के अनट्रैक्ड। नाउ ये जितने भी यहाँ पे जो भी फाइल्स होंगी इस टाइम पे, लेट मी आल्सो मेक अनदर वन index.css। अब ये जो फाइल्स हैं, ये सारी फाइल्स हैं इन दिस एरिया जो मेरे पास है वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे। Now, अब मैं यहाँ पे जितनी भी चेंजेस करूँगा, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ड किया है, मैं 5-6 दफ़ा लिख देता हूँ। अब ये चेंजेस इस टाइम पे किसी किस्म की ये ट्रैक नहीं हो रही, इनको मैंने भेजना होगा, इनको मैंने कमिट करना होगा एंड भेजना होगा टू द लोकल रिपोजिटरी, और तब जाके ये चेंजेस जो है उनका एक स्नैपशॉट बनेगा। सो नाउ टू डू दिस आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने उनको भेजना है टू स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया में भेजने के लिए आप टाइप करते हैं सिंपल गेट ऐड, और ऐड के बाद आप टाइप करते हैं जो भी फाइल आपने भेजनी है। सो रिमेंबर दिस कि जब भी आप कोई गेट रिलेटेड कमांड यूज़ करेंगे तो आपने हमेशा स्टार्ट में गेट यूज़ करना है उसके लिए। सो गेट तो आपने मस्ट यूज़ करना है। ऐड जो है दैट इज़ समथिंग दैट यूज फॉर टू मूव द फाइल्स टू द स्टेजिंग एरिया। एंड another quick note, if you are not comfortable with using terminal या कमांड प्रॉम्प्ट, या आपको कमांड्स याद नहीं होते, या फिर फॉर एनी रीज़न इफ़ यू डू नॉट वांट टू यूज़ इट, तो आपके पास डिफरेंट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी है जिनको आप यूज़ करके वही सेम चीज़ें अचीव कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट उसमें वही सेम है, कमिट्स, फैच, पुल, पुश एक्सेट्रा, बट उसमें आपको आपके पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा रादर देन आपके पास ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है। ओके, सो उसके बाद गेट ऐड एंड देन आपने उसके फाइल का नाम देना है। सो इन दिस केस आई हैव index.html. You can go with one file. If you want, you can go with multiple files. For example, index.css, and then आपके पास जितनी भी फाइल्स हैं आप उसको टाइप कर सकते हैं, जैसे index.js एक्सेट्रा। बट कुछ केसेस आपके पास ऐसे होंगे कि लेट्स से आपने 10, 15, 20 फाइल्स में चेंजेस किए, तो अगर आप एक एक करके बैठ जाए उसको लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो दैट्स अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। तो उस पर आप ये कर सकते हैं कि लेट्स से आपने जितनी भी फाइल्स में चेंजेस किए है, 100 है, 200 है, 300 एक्सेट्रा, उन सबको आप एक ही दफ़ा पे स्टेजिंग एरिया में मूव करना चाहते हैं। सो यू जस्ट नीड टू टाइप गेट ऐड डॉट, और उससे ये होगा
कि जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी फाइल्स में आपने चेंजेस किए, वो सब के सब स्टेजिंग एरिया में मूव हो जाएंगे. सो इफ आई डू दिस git add dot, तो जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी फाइल्स जो है वो मूव हो गई टू द स्टेजिंग एरिया. नाउ इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी कि क्या वो फाइल्स मूव हो गई या नहीं हुई एक्सेट्रा. एक तो क्विक मेथड ये है कि यहाँ पे स्टार्ट पे पहले यू था और अब ए आ गया. ए मीन्स के एडिट, यू मीन्स अनट्रैक्ड. बट द वे आई फिगर दिस आउट कि क्या कौन सी फाइल्स कहाँ पे है, सो देयर इज अ कमांड फॉर दिस. So okay, here is the step. जो command है git add and then the file name. उससे आपकी files जो होती है वो जाती है to the staging area. Now before I come to this part, if you want to check कि आपके files का status क्या है इस टाइम पे, कौन सी file कहाँ पे है, कौन सी file staging area में है, कौन सी commit हो चुकी है, कौन सी working directory में है एक्सेट्रा, उसके लिए आपके पास ये command है git status. Now git status को check करने के लिए just type git status and यहाँ पे you can see changes to be committed और changes to be committed में मेरे पास ये दो files आई है. To be committed means कि staging area में है और they are waiting for the commit. और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे अगर से एक न्यू फाइल बना लेता हूँ index.js और मैं अगेन टाइप कर देता हूँ git status, तो चेंजेस टू बी कमिटेड में मेरे पास वही दो फाइल्स है, वेयर इज अनट्रैक्ड फाइल में मेरे पास index.js आ गई, क्योंकि index.js मैंने अभी ऐड की है और वो स्टेजिंग एरिया में नहीं गई. सो हियर इज हाउ यू कैन वेरीफाई दैट. नाउ तीसरी चीज़ कहती है कि जो फाइल्स लोकल रिपोजिटरी में होगी उनका कैसे आइडिया होगा. सो व्हाट आई कैन डू कि मैं इसमें एक फाइल को भेज सकता हूँ, एक फाइल को भेज देता हूँ, बल्कि इस यहाँ पे मैं एक फाइल को नहीं भेज सकता. यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं स्टेजिंग एरिया में वो सब के सब जाएंगे. So that is something you need to keep in mind. जब आप कमिट करते हैं तो स्टेजिंग एरिया में चाहे एक फाइल हो, 10 फाइल हो, 20 फाइल हो, आप वो सब के सब जो है वो कमिट होंगे. सो दैट्स नॉट एन इशू. हम इसको कमिट कर देते हैं एंड देन उसके बाद हम एक मे बी एक और फाइल जो है उसको मूव कर देते हैं टू द स्टेजिंग एरिया, ताकि हमारे पास तीनों स्टेजेस में एक एक फाइल हो एटलीस्ट. सो कमिट करने के लिए आपके पास जो कमांड है दैट इज गिट कमिट -m एंड देन कोर्स में आपका मैसेज. डैश मैसेज शॉर्ट हैंड है एंड कोर्स में आपका जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं, मेक श्योर दैट द मैसेज इज मीनिंगफुल, ताकि कल को जब कोई और उसको चेक करेगा तो ही और शी गेट्स एन आइडिया कि एग्जैक्टली क्या मैसेज था या क्या चेंजेस हुए. सो इसमें आप वही लिखते हैं जो आपने चेंजेस किए. फॉर एग्जांपल आपने कोई बग फिक्स किया है तो आप उसके हवाले से लिख देते हैं, या फिर आपने कोई ऑथेंटिकेशन ऐड किया है तो यू कैन से ऐड ऑथेंटिकेशन या ऐड लॉगिन साइन अप मॉड्यूल्स एक्सेट्रा. So if I do git commit -m basic template, क्योंकि एक template बन गया हमारा और मैंने इसको commit कर दिया. Now you can see कि यहाँ से वो a या u या जो भी था highlighted थे वो सब कुछ ख़त्म हो गया. And now if I do git status, तो यहाँ पे मेरे पास just ये एक फाइल आ गई है index.js की. That means कि जो बाकी फाइल्स हैं यहाँ पे लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो गई, तो वो ऑलरेडी लोकल रिपोजिटरी में जा चुकी है. So that is something इस तरह आप उसको चेक कर सकते हैं. Now let me maybe make another file style.css and मैं उसको भी भेज देता हूँ to the staging area. So that will be git add style.css. Enter किया. अब उसके बाद git status. So git status में you can see changes to be committed, style.css, untracked file, index.js. और जो बाकी दो फाइल्स हैं जो नहीं शो गई वो ऑलरेडी लोकल रिपोजिटरी में जा चुकी है. सो दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड. अब ये जो वो फ्लो था उसको वी जस्ट डिड दैट कि हमने फाइल्स को उठाया, फाइल्स को हमने भेजा टू लोकल रिपोजिटरी, फाइल्स को हमने भेजा टू स्टेजिंग एरिया और स्टेजिंग एरिया से हमने उसको भेज दिया लोकल रिपोजिटरी. सो आपके जो लोकल रिपोजिटरी का फ्लो होता है वो कुछ इस तरह कि आप अगर उसको ऐड करते हैं एंड देन उसको फिर से कमिट कर देते हैं. नाउ अनदर थिंग इज जब आप उसको यूज़ करेंगे, जब आप ये एग्जैक्ट यही कमांड्स यूज़ करेंगे, तो जब आप उसको कमिट करेंगे गेट कमिट, तो वो कमिट नहीं होगा इनिशियली. आपके पास मैसेज आएगा कि कैन नॉट बी कमिटेड. और वो इसलिए आएगा क्योंकि जब भी आप कमिट करते हैं तो गिट आपका नाम, आपकी ईमेल जो है वो सेव कर देता है अपने पास.
जब आप उसको फर्स्ट टाइम आपने गिट इंस्टॉल किया है तो उस टाइम पे गिट के पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि हु यू आर, तो आपके पास मैसेज आएगा कि आप अपना नेम और ईमेल ऐड कर दें। और वैसे वहाँ पे आपके पास सिंटेक्स आ जाएगा, बट इट इज़ समथिंग लाइक दिस, git डैश डैश config global यूज़र डॉट नेम, और अपने अपने यूज़र नेम सेट कर देना है, एंड देन इसी तरह यूज़र डॉट ईमेल। ये सिंटेक्स आपको याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास आप कमिट करेंगे तो वो कमिट नहीं होगा, और साथ में आपके पास वो मैसेज आ जाएगा कि कमिट ना होने की वजह क्या है, और उसमें आपके पास ये कमांड होगा। तो आप ये कमांड वहाँ से कॉपी करके एग्जीक्यूट कर दें और अपना नेम एंड ईमेल ऐड कर दें, एंड आपका कमिट हो जाएगा। नाउ हमने एक कमिट किया है अभी तक, लेट्स आल्सो डू अनदर कमिट। सो अनदर कमिट के लिए maybe I can add the style file, this one. So इसको मैं कमिट कर देता हूँ add additional style and सेव कर दिया। अब अगर मैं चेक करता हूँ get status, so get status से मेरे पास let me remove the unnecessary information. get status से मेरे पास आ रहा है untracked files, उसमें again वही index.js है। So हमने अभी दो commits टोटल कर दिए, which means दो snapshots बन गए। Now if I remove this and इसके बाद सो हमारे पास अभी दो स्नैपशॉट बन गए, एंड यू कैन चेक दिस एज वेल बाय टाइपिंग गिट लॉग, और गिट लॉग से आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपने क्या क्या चेंजेस की थी। सो हमारे पास दो कमिट्स आए थे। सो ये मेरे पास एक फर्स्ट कमिट था यहाँ पे, ये मेरे पास लास्ट कमिट है, एडिशनल स्टाइल, एंड देन ये मेरा फर्स्ट कमिट था बेसिक टेम्पलेट। सो ये तो हमारे पास कमिट्स आ गए, एंड उसके अलावा यू कैन सी कि ऑथर में मेरा नाम है और साथ में मेरी ईमेल है। सो ये जो डेटा है ये आप से वो गिट स्टार्ट में उठाता है। जब आप टाइप करेंगे गिट कमिट तो आपके पास मैसेज आएगा, और उस मैसेज को फॉलो करते हुए अपने नेम और ईमेल सेट कर देना है, एंड इट्स वन टाइम थिंग, अपने उसको जस्ट वन टाइम करना है। सो यहाँ तक हमने जो कवर किया है दैट इज़ वर्किंग डायरेक्टरी से लोकल रिपॉजिटरी पे किस तरह भेजते हैं फाइल्स, एंड देन बीच में जो स्टेजिंग एरिया होता है उसको कैसे भेजते हैं, एंड देन उसके बाद जो है तो लोकल रिपॉजिटरी पे कैसे मूव करते हैं। नाउ इसके बाद वी विल मूव ऑन टू द गिटहब पार्ट, बट यहाँ तक अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो अबाउट कमिट या लॉग या फिर स्टेटस एक्सेट्रा। All right. If no question, then we can move forward. So the next thing is यहाँ पे हम क्या करेंगे कि we will go to our GitHub, or you need to go to the github.com. So what we need to do next is हमारे पास ये चीज़ें कवर हो गई। Now the next thing is we have to make a repository on GitHub. सो दो रिपॉजिटरीज होती है, एक आपके पास लोकल डिस्क पे रिपॉजिटरी होती है, एक आपके पास होती है गिटहब रिपॉजिटरी। सो गिटहब रिपॉजिटरी मींस रिमोट रिपॉजिटरी, विच मींस कि उसको आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज जस्ट इंटरनेट, क्योंकि वो कोड जो है होता है वो गिटहब पे होस्ट है, आपकी लोकल डिस्क पे नहीं है। लोकल रिपॉजिटरी आपके पास जो लोकल डिस्क में है वो है। सो हियर इज माई गिटहब, एंड यहाँ पे आपने क्या करना है कि you need to do is you need to, let me zoom in. So यहाँ पे आपके पास जब साइन अप करेंगे, साइन अप इज सुपर सिंपल, आपने एक दफ़ा साइन अप कर देना है, एंड देन साइन अप करने के बाद लॉगिन हो जाना है, एंड लॉगिन होके हियर यू हैव द रिपॉजिटरीज। सो आपके पास एक ये मेथड है कि आप यहाँ से रिपॉजिटरी ऐड कर दें, या फिर आपके पास यू नीड टू गो योर प्रोफाइल, एंड योर प्रोफाइल में जाके रिपॉजिटरीज में जाके यहाँ से भी आप ऐड, तीन चार डिफरेंट मेथड्स हैं। All you need to know is just one method and that will do the job. So yeah, github.com पे सिंपल जाएं, क्लिक ऑन दिस रिपॉजिटरी के साथ में जो बटन है, एंड यहाँ पे टाइप द रिपॉजिटरी नेम। सो हर रिपॉजिटरी को अपने नाम देना होता है, which will be eventually its path. So hktubal, and
यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि व्हाट दिस रिपोजिटरी इज अबाउट. सो दिस इज Hacktoberfest repository for a session. उसके बाद यू हैव एन ऑप्शन क्या आप उसको पब्लिक रखना चाहते हैं या प्राइवेट. पब्लिक मीन्स कि एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन एक्सेस, बट दे कैन जस्ट एक्सेस. वट चेंजेस नहीं कर सकते until unless you give them access, you allow the commit. प्राइवेट मीन्स कि जस्ट वो लोग एक्सेस करेंगे जिनको आपने एक्सप्लिसिटली एक्सेस दिया होगा. सो आई विल मेक दिस पब्लिक, and then here are the few things. You can ignore this completely for now. You do not need to understand this for now. And also this is out of the scope of this session. And simply click on create repository, and that will create this repository for you. Now I'm going to share this in the chat as well, और वहाँ से you will be able to visit this and check it. So here is the link. अब यहाँ पे आप जब जाएंगे तो ये आपके पास फिलहाल यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, बट वट वी आर गोइंग टू डू इज हम यहाँ पे जो लोकल डिस्क में फाइल्स है वो हम यहाँ पे पुश करेंगे, अपलोड करेंगे, एंड देन इफ़ यू देन रिफ्रेश द पेज तो जो मेरे पास लोकल डिस्क में ये फाइल्स थी ये आपके पास भी शो होने लगेगी. सो वट वी डिड जस्ट नाउ इज हमने एक लोकल रिपोजिटरी बना दी, रिमोट रिपोजिटरी, गिटहब रिपोजिटरी बना दी. The next step is before we push the code, before हम अपने लोकल डिस्क पे जो भी कोड है हम उसको अपलोड करें टू गिटहब, हमें like इस टाइम पे लोकल रिपोजिटरी को कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी रिमोट रिपोजिटरी है या कौन सी गिटहब की रिपोजिटरी है जहाँ पे मैंने अपना कोड भेजना है. सो वी हैव टू गिव द रिमोट लोकल रिपोजिटरी सम इंस्ट्रक्शंस, एंड इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको ये कमांड यूज़ करनी होगी. सो बेसिकली हर जो पाथ होता है आपके पास, जो गिटहब की रिपोजिटरी है, फॉर एग्जांपल ये वाली, इसका पाथ है github.com/khatakdev/hgitubber. इसी तरह हर रिपोजिटरी का एक अपना पाथ होता है. सो द वे इट वर्क्स इज गिट, अगेन गिट तो आपने हमेशा यूज़ करना है जब भी आपने गिट कमांड यूज़ करनी है. रिमोट मीन्स के जब भी कभी आप रिमोट रिपोजिटरी या गिटहब रिपोजिटरी के साथ कोई भी काम कर रहे हैं तो देन यू हैव टू यूज़ रिमोट. Now here what's happening is git remote add, which means के add a remote repository. So ये तीन commands जो ये keywords हैं. Then the next two ये जो तीन loves हैं. Then the next two words, origin जो है वो आप basically उसको एक नाम दे रहे हैं. It's totally up उसको क्या नाम देना चाहते हैं, origin, main, master, anything, remote, कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हैं. वो उसका एक नाम होता है जिसको आपने बाद में यूज़ करना होता है. Remote repo जो है, remote repo is basically the path of the repository. So this is the path. Simply आपने इसको copy कर देना है, and using that command हम इसको add करते हैं. So it will be git remote add origin and then उसका path. Again origin को आप change करके कुछ भी add कर लिख सकते हैं. And if I enter that, execute that, तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, एंड विच मीन्स के सक्सेसफुली रिमोट रिपोजिटरी ऐड हो गई है. एंड टू क्रॉस चेक दैट यू कैन आल्सो डू गेट रिमोट -v, और -v से आपके पास लिस्ट आ जाती है कि आपने इस लोकल रिपोजिटरी को कितने गिटहब रिपोजिटरीज के साथ कनेक्ट किया है. नाउ व्हेन आई से कि कितने गिटहब रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट किया, दैट मीन्स के आप मल्टीपल गिटहब रिपोजिटरीज यूज़ कर सकते हैं. सो आपके पास ये एक रिपोजिटरी है, इसी तरह अगर आपके पास ऐसे कोई दूसरी रिपोजिटरी हो गई, लेट मी पिक इन अदर रिपोजिटरी है, हम उसमें कोड पुश नहीं करेंगे, बट आई कैन जस्ट गिव यू क्या आप उसमें कर सकते हैं. सो git remote add, maybe I can do maybe repo. I cannot think of any other name. So ये मैंने दूसरी रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट कर दी. नाउ इफ आई डू git remote -v, तो here you can see कि अब मेरे पास दो रिपोजिटरीज है, एक है origin, एक है repo. सो आप मल्टीपल रिपोजिटरीज ऐड कर सकते हैं, और जब आप कोड पुश करेंगे तो आपने डिफाइन करना है, आपने बताना है कि किस रिपोजिटरी में उसको भेज दें. वी डू नॉट नीड दिस repo. सो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग git remote remove और आगे रिपोजिटरी का नाम.
और उससे आपके पास रिपोजिटरी रिमूव हो जाती है. सो गेट रिमोट डैश वी, अभी मेरे पास अगेन वही एक रिपोजिटरी आ गई. सो यहाँ पे हमारे पास रिपोजिटरी आ गई है. द नेक्स्ट थिंग इज हमने उसको भेजना है टू ओवर गिटहब रिपोजिटरी. सो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज पुश एंड पुल. सो पुश, एज आई सेड बिफोर, कि पुश बेसिकली मीन्स कि आपका कोड जो है वो आप अपलोड करते हैं टू योर गिटहब, एंड पुल मीन्स कि आप अपना कोड डाउनलोड करते हैं फ्रॉम गिटहब. सो उसके लिए गिट पुश एंड देन ओरिजिन, आपने जो भी उस रिपोजिटरी का नाम दिया, एंड देन मास्टर. सो ये जो मास्टर है, जस्ट एक ओरिजिन, मास्टर जो है दैट इज समथिंग टोटली अप टू यू. बेसिकली दिस इज नॉट अ कीवर्ड. आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं इन गिटहब और इन गिट, तो दैट इज वन ऑफ द ब्रांच. I'm not going to talk about this a lot, but just to give you a quick idea, ब्रांचेस बेसिकली आपके पास इस तरह होते हैं कि अगर से आपके पास कोई एक फोल्डर है, यू कॉपी दैट फोल्डर, आप उसको डुप्लीकेट बनाते हैं या उसकी कॉपी बनाते हैं. सो नाउ जैसे ही आप उसकी कॉपी बनाते हैं, सो दोनों फोल्डर्स में, या अगर से आपके पास कोई नोटपैड की फाइल है, आपने उसकी कॉपी बना दी, दोनों फाइल्स में एग्जैक्ट सेम कोड होगा या सेम कंटेंट होगा जब जिस टाइम पे आप उसकी कॉपी बना देते हैं. बट कॉपी बनाने के बाद अगर आप किसी एक फाइल में चेंज करेंगे तो दूसरी फाइल में वो चेंजेस नहीं आएगी, वो जस्ट एक फाइल में ही होगी. सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ ब्रांचेस एज वेल, कि आप आपका जो कोड होता है उसकी आप ब्रांच बनाते हैं, और ब्रांच में जब भी आप उसकी चेंजेस करेंगे, सो थिंक ऑफ ब्रांचेस एज अ फोल्डर, और फोल्डर आप उसको बनाते हैं, मतलब कॉपी करते हैं, और उस फोल्डर में जब आप चेंजेस करेंगे तो वो मेन फोल्डर जो है उसमें चेंजेस नहीं होगी. मतलब जब भी आप उसकी कोई दूसरी ब्रांच बना दी, उस ब्रांच में आपने कोई चेंजेस किए, तो वो ओरिजिनल ब्रांच जो थी, जो पहले थी आपके पास एक, उसमें चेंजेस नहीं हुई, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है. बट एट द एंड आप दोनों को फिर से मर्ज कर सकते हैं. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांचेस. It's a quite lengthy topic, so I would suggest you, if it's something not clear to you, to definitely have a look at it on Google. But ये एक general concept है branches का. Now यहाँ पे if you want you can also check the branches by doing get branch. इस टाइम पे मेरे पास ये एक ही ब्रांच है main की. So yeah, and apart from that, okay, so उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज के वी हैव टू पुश द कोड. सो गेट पुश origin, एंड देन origin के बाद वी कैन टाइप मेन, क्योंकि हम इस टाइम पे जो ब्रांच है हमारी वो है मेन. सो गेट पुश origin मेन एंड execute दैट, और इट विल आस्क मी फॉर पासवर्ड, क्योंकि I have two-factor authentication on my GitHub. So all you need to do is git push origin main, and वो हो जाने के बाद most probably it will not ask you for the password आपके कंप्यूटर का. So ये changes हो गई, and ये सारी जो डिटेल्स है, दिस बेसिकली मीन्स कि आपकी जो भी चेंजेस थी लोकल रिपोजिटरी से वो GitHub पे जा चुकी है. Now let's check that out. If I refresh this page, तो यहाँ पे you can see index.css, index.html, style.css. I already shared the link with you folks, so you can just copy that and उसको open करें तो आपके पास भी exact यही चीज़ें आपके पास show होगी. So that is how you can push the code. Now that is how you can push the code. Now let's try how you can do the opposite, pull the code. So this is the last thing which we will do, कि pull the code, and then I will actually show you in actual repository कि आप उस पे एक actual repository पे आप किस तरह changes कर सकते हैं. So उसके लिए to pull the code, now let's say किसी और ने किसी फाइल में चेंज करी. सो फॉर इंस्टेंस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं यहाँ पे डायरेक्ट चेंजेस कर रहा हूँ, क्यों, ताकि मेरे पास गिटहब पे कुछ अपडेटेड चेंजेस हो जो कि मेरे पास लोकल डिस्क पे नहीं हो. एंड देन वी कैन सी के उसको आप किस तरह लोकल डिस्क पे ला सकते हैं. सो मेरे पास मैंने कुछ डमी चेंजेस किए एंड उनको मैंने कमिट कर दिया. सो बेसिकली व्हाट आई डिड राइट नाउ इज मैंने डायरेक्ट गिटहब पे ही कोड चेंजेस कर दी है. अब ये कुछ कोड चेंजेस हैं
नाउ मेरे पास यहाँ पे जो फाइल है वो कुछ इस तरह है, वेयर एज जो मेरे पास लोकल डिस्क में जो फाइल है वो ये है। सो दैट मीन्स कि ये वाली फाइल अभी अपडेट नहीं हुई, मेरे पास गिटहब पे अपडेटेड चेंजेस हैं। सो थिंक ऑफ दिस चेंजेस एज योर पार्टनर डिड द चेंजेस, जो आपके FIP का प्रोजेक्ट है जो भी है, सो उसमें उन्होंने चेंजेस कर दिए। नाउ you also need to copy these changes to local repository. So the exact opposite of push is pull. So all you need is git pull origin main. Push की जगह से आपने यूज करना है pull. And now if I do this, so यहाँ पे you can see now कि वो जो चेंजेस थी वो यहाँ पे भी आ गई है। सो दैट इज पुश एंड पुल, कि आप कैसे उसको अपलोड करते हैं एंड कैसे उसको डाउनलोड करते हैं। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ गिट एंड गिटहब, कि उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो again, if anyone has any question, feel free to ask that. As Abhi, I can give you an example of actual open source contribution, and I can also give you an idea of कि आप कैसे how you can make your first pull request, and it's going to be super simple. तो किसी का कोई भी question हो, so please do ask that in the chat section. So the next thing is this is a repository जो कि मैंने specifically बनाई थी for Hacktoberfest yesterday, and you can use this repository or your first open source contribution if you're not sure कि आपने contribution कहाँ करनी है। For Hacktoberfest आपको minimum जो है तो 4 pull request बनानी होगी। Now I will also talk about कि pull request क्या है, but आपको minimum 4 contribution करनी होगी, and then only then you'll be eligible for जो भी Hacktoberfest का swag है for that. So ये मेरे पास repository है। यहाँ पे आपने like all of you who ever wants to make their first open source contribution, आप feel free to do that here. I'm going to give you an idea कि आपने exactly किस तरह करना है। One way is so like one यहाँ पे मैंने already उसकी documentation लिखी है, which can give you quite a good understanding of किस तरह आपने उस पर changes करनी है। So ये जो text है उन सबको I will give you a practical demo of that. Now ये repository है, I have a dummy account, so मैं जो dummy account है मैं उससे जाके इस पे contribution करूँगा। Yeah, so actually no, I cannot do that because for that I have to change my local GitHub account. But anyways, I can give you an idea for this. So the first thing you need to do is, see मेरे पास dummy account है, जब आपके पास आप अपनी ये लिंक ओपन करना है इन योर ओन अकाउंट, और आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे टॉप पे एक आइकन बना हुआ है फॉर्क का, आपने इस पे क्लिक कर देना है। एंड जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो भी ओरिजिनल रिपॉजिटरी थी विच वाज dev/hacktoberfest, उसकी एक कॉपी बन जाती है आपके अपने अकाउंट पे। सो नाउ यहाँ पे आई हैव दिस डमी अकाउंट e-खटक, सो यहाँ पे e-खटक/hacktoberfest forked from खटक/dev/hacktoberfest. सो दिस मीन्स कि मैंने उसकी एक कॉपी बना दी। नाउ दिस इज़ द वे, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, सो इसी तरह ही आप इसको स्टार्ट करते हैं कि आप इसकी कॉपी बना देते हैं बाय मेकिंग अ फॉर्क, एंड देन उसके बाद आप उस पर जाके कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन आप नहीं कर सकते जब तक कि मेंटेनर या जब भी उसके रिपॉजिटरी को मेंटेन कर रहा है वो आपको अगो ना कर दे। फर्स्ट स्टेप हो गया विच वाज टू फॉर्क द रिपॉजिटरी, दिस स्टेप। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि आपने उसको क्लोन करना है। सो क्लोन मीन्स कि आपने उसको लोकल रिपॉजिटरी पे लेके जाना है। सो फॉर दैट क्लोन करने के लिए आपके पास ऑलरेडी ये इंस्ट्रक्शन है, बट all you need is click on this code और यहाँ पे copy this path। ये path आपने copy कर देना है, and then आपने अपना command prompt open करना है, और command prompt में जाके आपने किसी जहाँ पे भी आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, इसका फोल्डर बनाना चाहते हैं, आपने उस पाथ पे आना है, एंड देन पाथ में आके आपने सिंपली उस पर टाइप करना है git clone
एंड देन आपका जो भी पाथ है वो टाइप कर देना है. सो व्हाट दिस विल डू इज, जो भी आपके पास गिटहब पे जो भी कोड रिपोजिटरी है उसको उसकी कॉपी बना के उसको डाउनलोड कर देगा बेसिकली. एंड देन आपके पास वो एक कंप्लीट फाइल आ जाएगी जिसको आप अपने जियो उसमें देख सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर में. बट मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ इन माय विजुअल स्टूडियो कोड. सो यहाँ पे मेरे पास वही एग्जैक्ट फाइल्स हैं जो मेरे पास वहाँ पे थी. सो वंस दैट इज डन, उसके बाद आपने ये करना है कि सो बेसिकली ये एक वेबसाइट है जो हैकटोबर फेस्ट की है. एंड इसमें आपके पास what you have to do is you have to make some changes, and I will talk about the changes कि आपने exact changes क्या करनी है. And then eventually आपके पास इस वेबसाइट में आपका नाम आएगा जिसके दिस कार्ड. तो आपके पास यहाँ पे आपका एक कार्ड बन जाएगा जब आप अपनी चेंजेस ऐड करेंगे. सो उन चेंजेस के लिए यू हैव टू डू इज, आपने जब आप इसको क्लोन कर देते हैं तो आपके पास ये पेजेस हैं. पेजेस में आना है. अगेन ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है आपके पास वो डॉक्यूमेंटेशन में दी गई है. बट जो चेंज आपने करना है वो आपने यहाँ पे contributors.json जो है यहाँ पे आपने चेंज करना है. एंड चेंज आपने ये करना है कि जस्ट कॉपी दिस टेम्पलेट कोड चेंजेस में आके कॉपी दिस चेंजेस और यहाँ पे कॉमा ऐड करके आपने जस्ट अपनी चेंजेस ऐड करनी है. सो आपने अपना नाम, टाइटल, पिक्चर, प्रोफाइल्स एक्सेट्रा वो सारी चीज़ें ऐड कर देनी. एंड आल्सो मेक श्योर कि पिक्चर में आप जो भी आपकी फ़ोटो है वो आप ऐड करें टू पब्लिक, और पब्लिक में आपके पास जो फेसेस हैं वहाँ पे ऐड कर दें उसको. एंड जस्ट डू दैट. एंड उसको करने के बाद all you need to do is save the file. तो जब आप इस फाइल को सेव करेंगे जस्ट डू git add dot I mean git add contributors.json और उसके बाद उसको कमिट कर देंगे. एंड कमिट करने के बाद सिंपली डू गेट पुश origin main. दैट्स द ओनली थिंग जो कि एग्जैक्ट वही 3 स्टेप जो आपने प्रीवियस रिपीट किए हैं. नाउ अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, सो ये मेरे ओरिजिनल जो अकाउंट है खटक डेव के उस अकाउंट में चले जाएंगे. सो दैट्स व्हाई व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं उसको इस डमी अकाउंट से कर देता हूँ. और डमी अकाउंट से मेरे पास कुकर डिस्प्ले नहीं है तो मैं इसको यहीं पर ही कर देता हूँ. सो पेजेस में आना है, पेजेस में कंट्रीब्यूटर में आना है, contributor.json नॉट contributor.js. और यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट एडिट करके मैं चेंजेस लिख देता हूँ. सो लेट्स से मैं लिख देता हूँ डमी अकाउंट टेस्टर faces/dev.jpg and I guess that's enough. Commit the changes. अब ये चेंजेस कमिट हो गई, बट ये जो चेंजेस है ये मेरे पास यहाँ पे कमिट हुई है. जो ओरिजिनल कोड है, मतलब जो खटक डेव के अकाउंट में है कोड, वहाँ पे नहीं गई. सो वंस यू डू दैट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, आप जब कोड चेंजेस कर देंगे उसके बाद आप बनाएंगे एक पुल रिक्वेस्ट. पुल रिक्वेस्ट मीन्स के हे मेंटेनर, आई डिड द चेंजेस, आई वांट यू टू रिव्यू दैट एंड मर्ज द कोड. सो पुल रिक्वेस्ट में आप ये करना होता है कि गो टू द पुल रिक्वेस्ट सेक्शन या टैब एंड क्लिक ऑन न्यू पुल रिक्वेस्ट. एंड यहाँ पे व्हेन यू क्लिक ऑन न्यू पुल रिक्वेस्ट आपके पास कुछ टर्म्स हैं. बेस रिपोजिटरी, बेस, हेड रिपोजिटरी, कंपेयर. सो आई गेस दिस इज द सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन. बेस रिपोजिटरी मींस के जिस रिपोजिटरी में आपने उसको मर्ज करना है, जिस रिपोजिटरी में अपनी कोड भेजना है. सो दैट इज द बेस रिपोजिटरी. तो ऑब्वियसली आपने उसमें मेन रिपोजिटरी सेलेक्ट करनी है, विच इज खटक dev/hacktoberfest, क्योंकि आपने अपना कोड वहाँ पे जाके मर्ज करना है. Main is the branch, give it as it is. Head repository आपकी अपनी repository होनी चाहिए क्योंकि आप यहाँ से कोड भेज गए. And then compare में भी आपका अपना branch होना चाहिए. And then click on create pull request और यहाँ पे आप अपना title and some description आप add कर सकते हैं. And then click on create pull request. So ये मैंने एक pull request बना दी from my dummy account. Now let me act as the maintainer और यहाँ पे now this is my
account, और यहाँ पे if I go to my pull request, I can see eKhatak made a pull request, or I can check the files, I can review the files, but here is the changes जो कि eKhatak ने कर दी है. और yeah, so अब इसके बाद what I need to do is I need to simply merge the changes, or that is something that I have to do. You do not need to do that, but changes ऐसे ही मैं merge करूँगा. So आपके पास you will your first contribution will be counted. So that is how you can make a pull request. Here is one example. आप उसमें कोई भी आप कोई भी रिपोजिटरी उठा के वहाँ पे आप कोड चेंजेस करके पुल रिक्वेस्ट बना सकते हैं, एंड दैट विल बी इन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन. नाउ if I click here, so you can see आपके पास यहाँ पे एक न्यू अकाउंट बन गया, न्यू कार्ड बन गया. So that is how you can make a pull request. Now all I need to do is मैं इसको यहाँ से merge कर देता हूँ, but I'm not going to do that since this is like dummy Hacktoberfest account. So yeah, इस तरह आपने करनी है open source changes, open source contribution. If you want to be a part of Hacktoberfest, so Hacktoberfest के लिए आपने ये करना होगा कि आपने इस तरह की 4 pull request बनानी होगी. अगर आप उसको सेम फाइल, सेम प्रोजेक्ट में, सेम रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, 4 के 4 पुल रिक्वेस्ट आप सेम रिपोजिटरी में भेजना चाहते हैं या फिर मल्टीपल रिपोजिटरी में भेजना चाहते हैं, टोटली अप टू यू, बट मेक श्योर दैट कि वो वैलिड चेंजेस हो. Another thing and the last thing to keep in mind is मेक श्योर कि जब आपका कोड मर्ज होता है, जब भी आपकी पुल रिक्वेस्ट है वो मर्ज होगी या अप्रूव होगी, तो मेंटेनर नीड्स टू गिव इट अ टैग Hacktoberfest का. दैट इज समथिंग मेंटेनर नीड्स टू डू दैट, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट. बट जब आप अपना कोड पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में मेक श्योर टू ऐड दैट के प्लीज ऐड Hacktoberfest टैग. उससे ये होगा कि आपकी जो पुल रिक्वेस्ट है या कंट्रीब्यूशन है वो वैलिड Hacktoberfest कंट्रीब्यूशन काउंट होगी. एल्स वो Hacktoberfest कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं होगी, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन काउंट हो जाएगी. सो दैट इज समथिंग जो कि Hacktoberfest का वो है, एक बेसिक कंडीशन है कि आपने उसका एक टैग होना चाहिए उस पुल रिक्वेस्ट पे. सो या, एंड यू हैव टू मेक दीज 4 pull request. Now here is the branches concept, which I'm not going to cover because since it's already been like almost 50 to 60 minutes, but feel free to check this out on Google. It's definitely one of the most important topic. But yeah, here is the overview. So what we did is we start with how to make a simple Git repository by using Git init. उसके बाद हमने check किया कि how to move the files to the staging area, how to make the commit, how to check the status, how to push the code, pull the code, and then branches, which we did not cover. So yeah, that is pretty much it. If you have any question, feel free to ask. So किसी का question था, if I remember, about fetch, and let me recall. Fetch, okay. So someone asked you what is fetch. So there are 2 terms. One is fetch and one is pull. So what happens is that जब आप git pull करते हैं, so git pull में आपके पास 2 चीज़ें होती हैं basically. Git pull में आपके पास first step होता है कि check कि यार लोकल रिपोजिटरी और GitHub रिपोजिटरी में चेंजेस हैं, मतलब कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो GitHub रिपोजिटरी पे है लेकिन लोकल रिपोजिटरी पे नहीं है. वो एक फर्स्ट स्टेप होता है. If there are some changes, तो then the second step होता है git pull में. Second step होता है कि merge those changes, like उसको कॉपी करके changes merge कर दें. That is the second step. Git fetch जो है, Git fetch just आपके पास ये करता है कि just check कि क्या GitHub रिपोजिटरी पे ऐसी changes हैं जो रिमोट लोकल रिपोजिटरी पे नहीं है. Just वो एक checking होती है, merging नहीं होती. So git pull जो है वो first करता है git fetch और उसके बाद उन changes को merge कर देता है. Whereas git fetch में just आपके पास वो check होता है कि क्या changes है जो GitHub पे है और लोकल रिपोजिटरी पे नहीं है. So that is the difference and that is the idea of git fetch. All right. Any other question from anyone? So at this point, if you have any questions, you can just unmute yourselves and ask Arsalan.
I guess we don't have any questions. So before we finish off, we'll just have a little quiz game for you all. And thank you so much, Arsalan. We appreciate the amazing walkthrough you just gave us right now. Now, I'll be sharing my tab with you. All right. तो अब आप ऐसा करें, you have to go to joinmyquiz.com and you have to enter this code. मैं इधर मीटिंग चैट में भी आप लोगों को सेंड कर देती हूँ and you can just simply click on that. We will play a little game together before we finish off. Nobody joined yet? मैंने एक मीटिंग चैट में लिंक सेंड किया. What you have to do is click on the link and आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और जहाँ पे आपने अपना नेम एंटर करना है and then you have to enter the quiz game. Then I'll be starting the quiz. I'll wait 5 minutes and then I'll be starting that. Are you guys joining? आप लोग join कर रहे हैं? There are about 10 people in the quiz. Okay. What about the rest? I'll just wait for like 2 more minutes और फिर हम start करेंगे.